Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज हम matrices का second video नहीं किया, and in this video what we will discuss about algebra of matrices. Algebra of matrices. Algebra of matrices में first वाला addition. How do you add two matrices? Second one is your subtraction. How do you subtract? Third one is your transpose. Fourth one is your scalar multiplication. Scalar multiplication. Or fifth one is your matrix multiplication. Matrix multiplication. Addition माने how do you find a plus b plus c or a plus b plus c? Subtraction a minus b. Transpose how do you get a transpose or a dash. Scalar multiplication माने constant into the matrix. Multiplication माने a into b. Product of two matrices. एट हम डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर दैट व्हाट वी हैव डन इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स गोटे वीडियो हम कर सकते जदि सेटा देखि नथि सेटा जाई हमें देखि दो प्लेलिस्ट टू जाई आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखि दो. देखि देला पर एगोडा सुबह चैनल रे नुआ थिए जदि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस. या पर हम यार जेई करियो जेई 2019 20 and 21 if possible 22 also. जेमती हमें सेट रिलेशन फंक्शन रे करथिले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रे करथिले सेमती हमें करियो. ओके तो चल स्टार्ट करियो. व्हाट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आर? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस माने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस माने हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस. यहाँ पे कंडीशन कौन होची? order equal. Order must be equal. Must be equal. दुटा जाक मैट्रिक्स रो ऑर्डर कौन है वो इक्वल है वो. देन ओनली वी कैन ऐड एडिशन या सब्ट्रैक्शन. बोथ कैन बी पॉसिबल ना. तो फॉर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ द बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल. जो ऑर्डर इक्वल है गला वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट. ऐड भी कर पारे सब्ट्रैक्ट भी कर पारे. हाउ डू यू ऐड? बाय while adding and subtracting. While adding and subtracting the corresponding elements. The corresponding elements are getting added or सब्ट्रैक्ट. while adding और subtracting corresponding element को हम ऐड करियो और सब्ट्रैक्ट करियो. गोटे एग्जांपल नेबा एमती दुटा मैट्रिक्स नियो. एमती दुटा मैट्रिक्स नियो जोठी दुटा जगह ऑर्डर कोन हो इक्वल हो. सो लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 and 2 minus 1 5. let this will be a. and b is equal to 0 3 4 and minus 2 5 and 7. so these are a and b. now यार ऑर्डर कहते 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम. हियर आल्सो 2 रो 3 कॉलम. नाउ सिंस बोथ द मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर वी कैन फाइंड द सम एंड वी कैन फाइंड द डिफरेंस आल्सो. सो देयरफॉर a प्लस b केमती ऐड करबा देखो. यार करस्पोंडिंग माने बुझो यार फर्स्ट रो रो फर्स्ट एलिमेंट यार भी फर्स्ट रो रो फर्स्ट एलिमेंट. तो 1 plus 0 will be equal to 1. देन यार सेकंड. सो 2 plus 3 will be equal to 5. 3 plus 4 will be equal to 7. 2 minus 2 will be equal to 0. Minus 1 plus 5 will be equal to 4. And 5 plus 7 will be equal to 12. So this is how you can get the value of a plus b. Now how do you get a minus b? Same thing subtract kariye. So this is 1 minus 0. This is 2 minus 3. This is 3 minus 4. This is 2 minus of minus 2. This is minus 1 minus 5. Direct भी लिख करिए. 5 minus 7. तो आंसर कहता है देखो 1 minus 0 will be equal to 1. 2 minus 3 minus 1. 3 minus 4 minus 1. 2 plus 2 will be 4 minus 6 and minus 2. So this is how you can add or you can subtract. Addition subtraction एमती है. प्रथम कंडीशन है दुईटा जगह ऑर्डर इक्वल हो. ऑर्डर ऑफ a and b must be equal. एटी कोन नेले हम एग्जांपल देखो 2 cross 3 8 भी नेले 2 cross 2. So एमती अछि you can add or subtract. So while adding the corresponding elements are getting added. While adding or subtracting corresponding elements are getting added or
subtract. Now second operation कौन होइगला ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मु एटा ट्रांसपोज दा तुमको आगुर कहि दिछि व्हाट ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज माने a इक्वल टू a ट्रांसपोज हां जदि a गोटे गिवन मैट्रिक्स द ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज और a रेज टू t ठीक है यार हेला ट्रांसपोज हां अब ट्रांसपोज रे हम कोन करछे इंटरचेंज करछे रो को कॉलम रे हां रो ये बनि गला कॉलम सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम आ जदि गोटे मैट्रिक्स अछि A यार ट्रांसपोज बाहर करे तो रो को कॉलम रे इंटरचेंज कर देले पुनी ट्रांसपोज बाहर करे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हिच इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1 एथ पे रखछि ट्रांसपोज रो काई न मत प्रॉपर्टी कहबार अछि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज रो कोन प्रॉपर्टीज अछि देख लियो द प्रॉपर्टी नंबर 1 व्हिच इज p1 हां प्रॉपर्टी नंबर 1 इज if A is a matrix and B is a matrix, A plus or minus B transpose equal to A transpose plus or minus B transpose. हाँ A रो ट्रांसपोज करो B रो ट्रांसपोज करके ऐड करो या A रो ट्रांसपोज B रो ट्रांसपोज को माइनस करो या दुईटा जाको ऐड कला पर ट्रांसपोज बाहर करो बोथ द केसेस द आंसर इज सेम हाँ देन K into A transpose equal K into A द ट्रांसपोज इक्वल टू K कांस्टेंट बाहर को आसी A रो ट्रांसपोज फिर K इज अ कांस्टेंट where K is a constant माने number ठीक है then A into B transpose is equal to this is very important equal to B transpose into A transpose reversal property कर A into B रो ट्रांसपोज प्रथम B रो ट्रांसपोज then A ट्रांसपोज similarly जब लिखो A into B into C रो ट्रांसपोज so this will be equal to C transpose into B transpose into A transpose similarly जब जनरलाइज करके लिखो A1 A2 till an रो ट्रांसपोज तो माने फर्स्ट कोन आछो फर्स्ट आछो an रो ट्रांसपोज नेक्स्ट कोन आछो an - 1 रो ट्रांसपोज एम्प्टी हे लास्ट आछो a1 रो ट्रांसपोज तो इज कॉल्ड द रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ is called the reversal property of transpose reversal property of transpose called the reversal property of transpose it is important this is very important बाकी डेटा तो ऑब्वियस है एठी आ गुड प्रॉपर्टी मध्ये लिखतो A transpose will be equal to this is one more property also even though it's a basic and trivial thing एटा हम गुड प्रॉपर्टी कहता so this is transpose multiplication of matrices by a scalar गोटे मैट्रिक्स को गोटे स्केलर रे मल्टीप्लाई स्केलर माने नंबर रे मल्टीप्लाई करियो लेट तो कोन हबो जो मैट्रिक्स रो एलिमेंट अछि जेतिके एलिमेंट थियो ऑल विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर when you multiply a matrix by a scalar when you multiply a matrix by a scalar each and every element of the matrix will be getting multiplied by the scalar example जदि A गोटा मैट्रिक्स अछि which is equal to ABC and PQR जोटा तुम बहिर एग्जांपल हां जदि मु कहि द for K into A what K into A is each and every matrix of element of matrix A will be multiplied by K now so first will become KA K into B K into C K into P K into Q K into R and let A is equal to for example 1 minus 2 3 and 4 1 5 therefore K को 2 कर दो 2 into A equal to each and every element will be multiplied by 2 so 2 into 1 is 2 minus 4 2 3 is 6 2 4 is 8 2 1 is 2 2 5 is 10 this is how a matrix will be multiplied by a scalar जितने एलिमेंट हो जितने एलिमेंट अछि मैट्रिक्स भीतर सब एलिमेंट को हमें कोन करियो से स्केलर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो ठीक अछि नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एटा इंपोर्टेंट आउट के ट्रिकी मध्ये एडा सब ध्यान कर सुनियो पिलान एठी सब भूल भाल कर इंपोर्टेंट एंड ट्रिकी कोन कहूची जदी A गोटा मैट्रिक्स अछि if there is a matrix A which is of order m cross n माने m number of row और n number of column अछि B is a matrix with order n cross p तो देखो A रो नंबर ऑफ कॉलम और B रो नंबर ऑफ रो इक्वल अछि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A
is equal to number of rows of B. Now this is M into N and this is N into P. If the first matrix is number of row, number of column, our second matrix is number of row equal, then only multiplication is possible. Huh? Multiplication possible when number of columns of A must be equal to number of rows of B. Then only we can multiply. If जदि मल्टीप्लाई आम कले A into B आमको C आसला, यार ऑर्डर कौन हम जोटा बढ़ीगला माने M क्रॉस P हो, M क्रॉस P. गोटे एग्जांपल लेवा छोटिया, जदि A गोटे मैट्रिक्स अछि यार ऑर्डर 3 क्रॉस 1 अछि, तो B गोटे मैट्रिक्स अछि जार ऑर्डर 1 क्रॉस 2 अछि. तो देखो यार कॉलम यार रो इक्वल, फर्स्ट रो कॉलम और सेकंड रो इक्वल, तो जदि नुआ मैट्रिक्स ता C आसला तार ऑर्डर हो 3 क्रॉस 2 जोटा बढ़ीगला सेट. One more example, जदि इट 2 क्रॉस 3 हला और B 3 क्रॉस 4 हला, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल. फर्स्ट रो कॉलम और सेकंड रो इक्वल अछि, जो नया मैट्रिक्स आछो नुआ मैट्रिक्स तार ऑर्डर हो 2 क्रॉस 4. जदि A is a matrix of 2 cross 3 and B is also a matrix of 3 cross 2, then order equal, so C will be a matrix of 2 cross 2, like that. बुझिगला. और जदि A गोटे मैट्रिक्स अछि 2 cross 3 and B गोटे मैट्रिक्स अछि 2 cross 3, then what will be C? C does not exist. देखो एटी कॉलम और एटी रो इक्वल अछि कि इक्वल नहीं, then A into B does not exist. एमती भी कर तो A रो नंबर ऑफ कॉलम एटा इंपोर्टेंट ना, A रो नंबर ऑफ कॉलम और B रो नंबर ऑफ रो ए दुटा जगह इक्वल हेबाक पड़ियो, then only we can multiply. मल्टीप्लाई केमती करबा देखो, गोटे कहू तुमको एटा गोटे मैट्रिक्स अछि और एटा गोटे मैट्रिक्स अछि, एटा रो 1 रो 2 या कॉलम 1 कॉलम 2, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सहित मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम सहित हो गला, गोटे रो नेबे सब कॉलम सहित, देन सेकंड रो नेबे फर्स्ट कॉलम सहित और सेकंड रो को सेकंड कॉलम. इसका एग्जांपल करिए, examples to show how matrix multiplication can be done. Look, example 1. Let A is 1 2. 1 2 is a matrix and 2 1 is a matrix. Multiply है परियो कि नहीं है परियो, कहीं ना फर्स्ट रो ऑर्डर हेगला 1 क्रॉस 2, 1 रो 2 कॉलम, एट हेगला 2 रो 1 कॉलम, 1 row 2 columns. This is 1 row and 2 column, and the second one is 2 row but 1 column. तो मल्टीप्लाई तो ही परियो, कहीं कॉलम और रो इक्वल अछि, मल्टीप्लाई केमती हो, गोटे फर्स्ट रो रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम रो फर्स्ट रो को कॉलम सहित करियो, फर्स्ट इनटू फर्स्ट एमती करियो, दिस इनटू दिस एमती करियो, फर्स्ट इनटू फर्स्ट माने 1 इनटू 2 हेगला, तापर सेकंड इनटू सेकंड माने 2 इनटू 1 और दुइटा जाको प्लस करियो, दुइटा जाको कोन करियो प्लस करियो, फर्स्ट इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू सेकंड, तो 1 इनटू 2 हेगला 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कोन हेगला 4. एटा हो आंसर, एटा हेगला आंसर. अब जो तुमको सर गोटे 4 केमती आसला, काइना जो ऑर्डर आसो सेटा 1 क्रॉस 1 आसो, कोन आसो 1 क्रॉस 1 माने ओनली वन एलिमेंट विल बी देयर. आ गुड एग्जांपल करिया सोटिया, एग्जांपल 2. लेट 1 2 3 2 1 5 multiplied by 1 minus 2 0 and minus 3 7 and 6. मल्टीप्लाई केमती करबा, फर्स्ट रो into first column माने 1 into 1, 1 into 1 will be 1, then second into second 2 into minus 2 will be minus 4, 3 into 0 will be 0. So done, first row into first column हेगला. Now first row into second column, first 1 into minus 3 will be minus 3, 2 into 7 will be equal to 14, 3 into 6 will be equal to 18. First second, then second row first column, 2 into 1 will be equal to 2, 1 into minus 2 will be equal to minus 2, 5 into 0 will be equal to 0, 2 into minus 3 is minus 6, 1 into 7 will be 7, 5 into 6 will be 30. So 1 minus 4 equal to minus 3, 14, 18 plus 4 will be 22, 18, 14, 32, 32 minus 3 will be 29, 2 minus 2 is 0, 30, and this is 1 will be 31.
So this I would example करिए. Let's take one more example. So 1 2 3 4 this is A and minus 1 0 3 and 7. हम तो multiply करें first row into first column. First into first. 1 into minus 1 is minus 1. 2 into 3 will be equal to 6. Then first row into second column. 1 into 0 will be 0. 2 into 7 will be equal to 14. Now second row into first column. 3 minus 3 into minus 1 will be plus 3. 4 into 3 will be 12. Minus 3 into 0 will be 0. 7 4 is 28. 6 minus 1 will be equal to 5. 14 plus 0 14. 12 plus 3 will be 15. 28 plus 0 will be 28. So this is how two matrices can be multiplied. गोटे रो को नेबे आ सब गोटे गोटे कॉलम को मल्टीप्लाई करिवे. फर्स्ट सेकंड थर्ड जते कॉलम अछि तापर सेकंड रो को नेबे सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिवे. आ जतला मल्टीप्लाई होतो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बीच रे प्लस लिखिवे. बीच रे कोन लिखिवे प्लस. Now properties of matrix multiplication. This is also important. Matrix multiplication is not commutative in general. Suppose muneli data matrix gote A a gote B, they are not commutative. So A into B and B into A, they are not always equal. They are not always equal. Matrix multiplication, ये first property. This is your property number 1, which is an important one. A into B should never is equal to B into A. Matrix multiplication is associative. Associative means A into B into C will be equal to A into B into C. Matrix multiplication associative. Distributive with respect to addition. Distributive means कौन होता है देखो A into B plus C, A into B plus C equal to A into B plus A into C. This is distributive with respect to addition. This is associative. This is not commutative. This is not commutative. Now in scalar matrix multiplication, जदि गोटे matrix multiplication हमें करूँ, गोटे constant will be always act like a constant. जदि constant अच्छे constant है क्या से multiply हो. It is the fourth property. Fifth property is the transpose of the product of two matrices. Product नली मु दीटा matrix यार transpose नली इक्वल टू मु एबे कहितली properties of transpose रे एटा हे जिवो transpose of their corresponding in reverse order. In reverse order. So B transpose into A transpose. The transpose of the product of two matrices is the product of their transpose taken in reverse order. ठीक है? तो matrix multiplication कौन कौन property? ये commutative न हो, माने A into B is not equal to B into A. ये associative, that is A into B into C equal to AB into C. And this is distributive with respect to addition. माने A into B plus C will be equal to AB plus AC. And the scalar जो constant also that will act as a constant in matrix multiplication. And the transpose of product of two matrices equal to product of their transpose but taken in reverse order. This is also called reversal property of transpose. बुझिगला? Equality of two matrices. Equality माने कौन? Two matrices are equal when their corresponding elements are equal. जब मैं एमती कहली, देखो, this is A plus 1, this is 2B, this is 3C, and this is 4D. Let this will be equal to 2, 4, 9, and 12. Suppose मैं एमती कहली, ये दुईटा मैट्रिक्स इक्वल माने यार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यार करस्पॉन्डिंग ये तो मैं एमती कहबी ना कि A plus 1 will be equal to 2, तो A equal to 2 minus 1 will be equal to 1. Similarly, मैं कहबी 2B is equal to 4, कहीं ना यार करस्पॉन्डिंग ये तो B is equal to 2. If I say कि 3C equal to 9, why? Because they are corresponding. Where they are corresponding. So C equal to 9 by 3 मतलब 3. And 4D is equal to 12, which implies D equal to 12 by 4, and that is also equal to 3. So when two matrices are equal, their corresponding elements are equal. तो देखो तुम बहिरे कौन देखी जदि गोटे मैट्रिक्स देला Aij m cross n आ गोटे मैट्रिक्स देला Bij m cross n इक्वल हबो केतल इक्वल हबो Aij इक्वल टू Bij माने यार करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट तार करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट दुटा इक्वल है मैट्रिक्स दुटा. अब देखो ये गोटे मैट्रिक्स और ये गोटे इक्वल केतल जब A1 इक्वल टू P1, B1 इक्वल टू Q1, C1 इक्वल टू R1, A2 इक्वल टू P2, A2 इक्वल टू P2, B2 इक्वल टू Q2, C2 इक्वल टू R2. आ गोटे एग्जांपल लेला एमती जदी हला 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 68. माने बेसिकली two matrices are equal when their corresponding elements are
equal. This is the only case when two matrices are said to be equal. बुझिगला कौन देखले ऑपरेशंस रे एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज एंड इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस दीज आर सम ऑपरेशन नेक्स्ट लेक्चर तो जो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो आसो सेथरे हम कोन करबा एक्सरसाइज करबा ठीक अछि टाइप्स ऑफ रो को टाइप रो को मैट्रिक्स हबो ऐड केमति करिवे सब्ट्रैक्ट केमति करिवे मल्टीप्लाई केमति करिवे दोस टाइप ऑफ थिंग्स इन दैट इज देयर इन the exercise. So exercise now is simply solve करें. Channel रो नुआ थी channel को like share and subscribe कर दे so that it will reach to all the audience. अब यार exercise सरला पर we are going to we are going to start with J exercises. J 2019-2021 रो question रो जो जागर matrix रो related अछि से गुडा हम गोटे वीडियो बनेबा and next lecture हम आसे exercise solve. We'll solve with your exercise. First exercise of matrix which is exercise 4A. Until then, bye.